Good afternoon, everyone. I welcome you to the webinar on Mission of Mental Health, which is organized by the Department of Applied Sciences. I feel privileged to open this event, but as it is our tradition to open every event by remembering our goddess Saraswati, so let's dedicate a prayer to Ma Saraswati. For that, to give a tribute to Ma Saraswati. नेटवर्क इशू अच्छा वॉल्यूम बढ़ाइए आवाज आ रहा है स्लो भविष्य आवाज आ रहा है स्क्रीन शॉट कितना चल रहा है रजन सर आवाज नहीं साफ आ The overall objective of World Mental Health Day is to raise awareness of mental health issues around the world and to mobilize efforts in support of mental health. The day provides an opportunity for all stakeholders working on mental health issues to talk about their work and what more needs to be done to make mental health care a reality for people worldwide. Now, I would like to invite Dr. Vipin Kumar Srivastava sir to continue the webinar. Thank you, Ansika. On behalf of Galgutia's College of Engineering and Technology, I, Dr. Vipin Kumar Srivastava, welcome our Director, Sir, Professor Muhammad Asim Kadri, Sir, our HOD and first year coordinator, Professor Rajesh Tripathi, Sir, and subject coordinator, Dr. Monica Malik, Dr. Rajendra Shah, Sir, Dr. Sushil, Sir. Welcome one and all present here. As you all aware that today is World Mental Health Day, and theme of the day is mental health is an unequal world. Mental health is essential part of our life. So to make aware, we are celebrating this day. Now I request to Dr. Anu to proceed further. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Vipin sir. Very good evening, one and all who has participated in the event. The world is celebrating Mental Health Day this year with the motto to make mental health and well-being for all a global priority. Before I introduce our speaker,
For the today's event, I would like to say a few lines which perfectly defines her. दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है. दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है. वो तमाशाई नहीं है मगर तमाशा देख सकता है. और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा. और हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर ले तो भी क्या होगा. जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है. With a huge round of applause, I warmly welcome Dr. Aanchal Makhija, a dental surgeon whose self-contentment, empathy, and feeling to see happy faces led her to current journey and transformed to a clinical psychologist and mental health counselor. Along with MA in clinical psychology, Dr. Aanchal has done different psychological and counseling therapy diploma and courses from Johns Hopkins Emergency Medical System, Maryland, USA. From the past 7 years, she had worked with many organizations like Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, as mental health counselor, in COVID-19 with Delhi government, with different NGOs like Udayan Care, as a patient support group counselor in Mohan Foundation, and many more. Additionally, she has been invited by reputed universities and colleges to deliver lectures on issues related to mental health. Since our audience are faculty of different universities and colleges and students who are usually living far away from their family, far away from their parents, their loved ones. So this session on the topic emotion and anxiety management will help us all to know how to deal with our emotions and anxiety by our own selves. Before proceeding further, I would like to inform our participants that there will be an activity and question hour session at the end of the talk. So when you can ask your query, so that there is no interruption during the session. Besides, for the certificate, you have to fill the feedback form, which will the link will be provided at the end of the talk. So without wasting any time, please welcome Dr. Aanchal Makhija. आवाज नहीं आ रही है. Thank you so much. Am I audible? 2 फ्लोर है उस बिल्डिंग में. Yes, yes. Yes, N59 के बिल्कुल सामने है. N को नहीं आ रही. ठीक है. Thank you so much. First of all, I would really like to thank Director Dr. Kadri for letting me and for inviting me on this World Mental Health Mental Health Day. Thank you so much, sir. Thank you so much, Vipin sir, for giving us this platform as an event coordinator, and also thank you so much, Dr. Anu, for giving such a warm welcome. Thank you so much once again. And today's event and today's topic is really, related to our day-to-day activities and day-to-day emotions we go through. So on this very special occasion of World Mental Health Day, I would really want to give information related to emotion and anxiety management. So मैं आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूंगी कि इमोशंस को हम क्या समझते हैं और हम किस किस इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो क्या कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि आपके लिए इमोशंस क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय इमोशंस? कोई भी अनम्यूट करके बताना चाहेगा कि हम इमोशंस को क्या समझते हैं और क्या हैं इमोशंस हमारे लिए? Dr. Smriti. I think emotion is we are related with the feelings with our family. We are emotionally attached with our family, with friends. Yes, absolutely right, Dr. Smriti. Emotions जो हमारी feelings होती हैं, वो feelings family से related हो सकती है, हमारी body में हो सकती है, हम कुछ भी feelings feel कर रहे हैं. तो कोई emotions के नाम बताना चाहेगा कि हम उन emotions को क्या नाम देते हैं? जैसे कि भावनाएं. Like happiness. Yes, happiness is an emotion. Or anger, fear. What else? Enjoyment. Okay, I will take this. So happy. What else? Guilt, Sadness. forgiveness.
Sadness, yes, sadness is also an emotion. Sadness, crying, guilt, Depressed. then what else? Depressed. Depressed. Okay, that is also an emotion if we can consider that. Okay. So ये जो भी हमने अभी emotions के names बोले, तो there are n number of emotions in our body at n number of time. Let's say right now मैं खुश हूँ, I'm happy, but यहाँ से आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद मैं घर जाती हूँ, मुझे कोई गुस्सा आ जाता है. So there is a shift of emotions happening in our day, and it is happening very repeatedly, very randomly, and consistently, right? और हम इस चीज को notice कर पाते हैं. तो ये जो इमोशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक 2 मिनट बाद, तो ये जो इमोशंस की बात कर रहे हैं, ये इमोशन सबसे पहले हम अपनी बॉडी में कैसे पहचानते हैं और बाद में उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये मैं अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ सेशन में बताऊंगी. तो Anu ma'am, can you please play this slide, and first slide we can go through. Okay, right now, all of you present here must close your eyes and identify कि हम अपनी बॉडी में कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, और हर किसी का इमोशन फैक्टर अलग होगा. And also to tell you कि एक like this moment we can have different emotions at one time also. Let's say I am 20% happy, 30% I am feeling sad, or maybe 30% I'm anxious, and then 10% I'm joyful also, plus 10% I'm confused. Confusion also an emotion. So just now, right now, close your eyes and take a deep breath and identify what kind of emotions you are carrying right now, just at this moment, at this present moment. Am I feeling fearful? Am I feeling joyful? Am I feeling sad or anxious? So what are the emotions I am? So why I am telling you is because until and unless we identify our emotions, we won't be able to manage them, right? So अभी मुझे क्या feel हो रहा है? मेरे emotions क्या हैं? So let me tell you, maybe right now I am stressed because I'm taking session. So that is my emotion. Long time I'm excited because I'm sharing something, right? Similarly, you all must be having some series of emotions going on in your body or in your mind. So are you able to identify that emotions? No, maybe. Are you able to identify? Sometime. Sometime, yes. Maybe we are like confused with the emotions most of the time. Dr. Anu, can you please play the presentation slide? Yeah, second slide. So this is a slide on our body which is having emotions at the same time. If you will zoom it, you will see the first half is anger, then that person is feeling confident, then happy, then peace, then guilt, and then unhappiness. तो अगर हम इस पिक्चर को देखें and इस पिक्चर से खुद को एनालाइज करें, तो हम अपनी बॉडी में right now, what is, you know, if you can want to draw, you can draw also.
and just analyze for 5 minutes. Just sit for 5 minutes or 3 minutes, close your eyes and figure it what all emotions I am feeling right now. And how much anger. And then I will tell you how to manage the emotions. How much happiness I'm feeling right now, or I'm happy or not, or instead of happy, I'm sad, or I'm carrying a guilt, or I am, not so confident, or feeling confident, or feeling stressed, or feeling anxious. So if we are able to identify that emotion, then that is a right step, a first step for emotion management. So tell me, how many of you can identify your emotions right now? How many of you can feel that you have more than 2 or 3 emotions right now? Yes, I can feel it. Yes, I can feel it. Thank you so much. Thank you so much. So moving further, when we have identified our emotions, we have labeled. When I have labeled my emotions, I have to accept and acknowledge my emotion. Yes, I am going through sadness. Acknowledge it. Say it loud. Yes, I have now accepted this emotion. This is my emotion, and everyone goes through this emotion. It's okay. So if, let's say, I am stressed and I am anxious and I'm fearful, right? So first and foremost thing after identification and labeling your anger and emotion is you need to accept and acknowledge. So 90% of the times we don't accept our emotions. We live in denial. Oh, whatever it is. If we are feeling guilt, we will not accept it. We will say, no, everything is fine. Nothing is wrong. So if we are angry, still we will not accept it. No, it was your fault. I was not angry. So it is okay. Accept your emotions. Acknowledge your emotions. Right? So जब हम अपने emotions को acknowledge करते हैं, हम अपने mind को signal दे रहे हैं basically that it's okay. This is one of my emotions. जब मैं happy था, तो I was happy. We definitely acknowledge our positive emotions, but not our negative emotions. So tell your mind, it's okay. I was angry. Yes, I was angry because there was a trigger. So I was angry. It's okay. It's fine. Then tell yourself that every minute is every emotion, every is impermanent. The impermanence in the life. That this emotion will definitely go away after some time. Because मैंने आपको थोड़ी देर पहले in the past, I would say, I said, please identify emotion. So that was 5 minutes before. So nothing is constant, like nothing is same throughout. Everything is changing. Every minute, everything is changing. So as our emotions. तो अगर मैंने I started with this dialogue that अभी हम खुश हैं, घर जाते जाते I will feel sad. That means there is a shift in the emotion. तो acknowledge करने के बाद, accept करने के बाद, say to yourself that this is not permanent at all. If I am stressed, if I am sad, this is not permanent. I will definitely be happy in 5 minutes or in next 3 minutes or in next 1 minute, right? So then when we have acknowledged it, we have said to ourselves, this is not permanent, then inquire and investigate. तब तक हम थोड़े से calm down हो जाते हैं. जब मैंने अपने anger को identify कर लिया, मैंने acknowledge कर लिया, मैंने उसको बोल भी दिया कि this is not constant, तो मैं तब तक थोड़ा सा calm down हो चुका हूँ. Then you have to investigate कि ये जो emotion आया, जो मैंने identify किया, cause क्या था? मैंने anger क्यों react किया? Trigger क्या था? So sometimes we feel like crying, or sometimes there is a reason, or sometimes there is not, right? तो cryingness feel हुई, crying bouts हुए, तो क्या trigger था मुझे वो investigate करना है. हो सकता है trigger था कि कुछ पुरानी यादें याद आ गई, या कोई सॉन्ग फेवरेट था और अब नहीं है, या कोई पर्सन जो मेरा पहले बहुत क्लोज था अब नहीं है. सो देयर आर सम ट्रिगर्स इन आवर लाइफ.
तो मेरे को इन्वेस्टिगेट करना है कि मेरे को ये जो इमोशन आया, एंगर, क्राइंग, व्हाटएवर द इमोशन वाज, ये क्यों था. So if we could get the answer of that trigger, that investigation, that question, then we will let go and of the need of to control our thought. है ना, बहुत सारे सेशंस वैसा बोला जाता है, और एवरी टाइम कोई बच्चे को गुस्सा आता है तो बोला जाता है, प्लीज कंट्रोल योर एंगर, प्लीज कंट्रोल योर क्राइंग. So we don't have to control our thoughts or our anger or our crying. We need to let go to the need of the control of our emotion. Okay. तो लास्ट पॉइंट, जब हम अपने ट्रिगर्स को इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, so we need to let go of controlling of emotion, controlling of our thought. We need to just let go of that emotion. We may start inhaling or having a deep breathing exercise, or just letting go that emotion with that. Inhale, deep inhaling through the nose and deep exhale through the mouth with the letting go of that emotion. So that is how we will identify our emotions, and we will be able to manage our emotions well. I will repeat my steps. First, we need to be aware of our emotions, जो कि हम इस पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हैं. एंगर है, कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेस है, एंशियसनेस है. जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, हमें उनको एक्सेप्ट करना है, हमें एक्नॉलेज करना है. यस, आई एम गोइंग थ्रू एंगर. यस, आई एम गोइंग थ्रू. इट्स ओके. टेल टू योरसेल्फ इट्स ओके. It's okay not to be okay. Impermanence of the time. I am feeling angry right now, but later on I will be fine. Then acknowledge कर लिया, question कर लिया. You can investigate कि मुझे anger क्यों आया, so that for the next time I will be little in my control. I know my trigger. जब मैं अगर investigate करते हैं, identify करते हैं, तो हमें अपने triggers पता हैं, right? तो हमें अपने triggers पता है, तो next time more cautious. Okay, next time मुझे अगर anger आएगा, तो I will, I know my trigger and I will be able to manage it. And then after that, acknowledge, trigger, investigate, and then let go the need of the control of the anger. Now you know how to manage your emotions really well, right? So now I will jump from emotions to one of our emotion, which is anxiety, which is anxiousness. So I won't ask how many of you feel anxious or how many of you feel restless, but I want to ask कि जब anxiety या anxiousness होता है, तो आपको क्या लगता है कि हमारे कौन से part of body affected होते हैं? What part of our body are affected? Heartbeat increases. Heartbeat increase होती है. What else? Palpitation. Yes, that will come with heartbeat only. What else? Breathing increases. Breathing, yes, definitely. हम breathlessness feel करते हैं. What else? Sweating होने लगती है. Sometimes headache होता है. पेट में there is little of butterflies or giddiness happens. What else? Headaches होते हैं. Anxiety में, anxiousness और restlessness में जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, हमारी नींद affect हो जाती है, हमारी एपेटाइट अफेक्ट हो जाती है. हम यूजुअली कुछ भी खाते हैं तो हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, या फिर हम नहीं खाते हैं, भूख नहीं लगती है, राइट? सो ये कुछ बिकॉज ऑफ वन इमोशन विच इज एंजाइटी और एंशियसनेस, our whole body is affected, our heart is affected, our mind is affected, there is sweating, our senses are affected, we feel shivering is there, trembling is there, and most very very important is breathlessness. So in the end of the activity, in the end of this session, I will also share how to manage your breathlessness problem during the anxiety. So yes, breathlessness is there, trembling, shivering, or her whole overall whole body is affected. तो जिन्होंने कभी एंजाइटी और एंशियसनेस और हिंदी में घबराहट, बेचैनी बोलते हैं, वो अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है,
तो मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जो भी स्टेज पे जाते हैं, कभी भी स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते हैं, डांस हो गया, स्पीच हो गया, कुछ भी, तो स्टेज से पहले, जिसको हम स्टेज फियर बोलते हैं ना, या फिर स्टेज से पहले की एंजाइटी, वो उसे एंजाइटी ही बोलते हैं। दैट इज नॉट फुल फ्लेजेड एंजाइटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइटी। तो अगर वो वैसी ही एंजाइटी, वैसी ही बेचैनी लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ जाती है, हमारी बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है, तो उसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी कहते हैं। मतलब सुबह से लेके शाम तक हम बेचैनी ही फील कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज अ सीवियर स्टेज। तो बेचैनी और एंशियसनेस को हम जब पहचान लें कि ओके आई एम फीलिंग दैट, जब वो सिम्टम्स मुझे पता चल जाए कि ये सारे सिम्टम्स हैं, जिसमें मेरी पैल्पिटेशन हो रही है, मेरे को बेचैनी हो रही है, मुझे भूख नहीं लग रही, स्वेटिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, सांस नहीं आ रही, बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू माउथ ब्रीदिंग आल्सो, तब भी बिल्कुल सांस नहीं आ रही है। अगर हमने वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट? So can you please shift to the next slide, which is a formula. This is this formula for this anxious or anxiety management. Which is pause. PAUSE. And pause में P stands for जहां भी हो, जैसे भी खड़े हो, जहां भी आपको बेचैनी शुरू हुई, just stop wherever you are, right? Sit there, stand, whatever you are doing, leave everything and pause it as early as possible when you recognize that okay, this is anxiety, this is बेचैनी। जहां आपको पता चल जाए वहीं पर बैठ जाओ, वहीं रुक जाओ, ठीक है? फर्स्ट स्टेप। Then A is activity such as breathing. Inhale and exhale. Start breathing. Start shallow breathing, deep breathing, whatever it is. You have to just leave everything and focus on your breathing. Inhale through your mouth and exhale through your inhale through your nose and exhale through your mouth. बहुत सारी तरह तरह की ब्रीदिंग्स होती हैं। हम सर्च करेंगे तो आएगा, एक स्टार शेप ब्रीदिंग होती है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सो दैट विल टेक अ स्टार शेप। ऐसा ये सब नहीं तो नॉर्मल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, नॉर्मल नॉर्मल। बट always and always focus on your breathing. स्टेज से पहले है तब एंजाइटी हो रही है, फोकस ऑन योर, because the moment we breathe, हमारा सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, ठीक है? तो दैट इज ब्रीथ। लास्ट स्लाइड प्लीज। ए इज last slide only, pause. So A activity is for activity, या तो हम breathing पे focus कर ले, हम similar movement में we start shaking our hands, we can jump, we can do jumping jacks, but jumping jack करने की हमारा बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, तो shaking is also fine, breathing is also fine, right? So then you is understand the situation, okay? Where am I standing? Look around, look the shapes around. Remember, you are here now and nothing is in danger. That remember that you are safe. So you is to understand the perspective, the outcome. Understand that wherever you are in a safe place. That you are fine, not in danger. अगर ये भी नहीं होता, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, आप आसपास देखने लग जाओ कि यहाँ पे क्या है, कलर क्या है, शेप्स क्या है, स्मेल क्या आ रही है। You know, I am feeling my heartbeat. मुझे अपनी heartbeat सुनाई दे रही है, और क्या सुनाई दे रहा है मुझे, मतलब अपने senses को activate कर लो। अगर हम अपने senses को activate कर लेंगे तो हम situation को understand कर लेंगे, environment को understand कर लेंगे, right? So that is you. Then S is to soothe yourself, to to calm yourself, that everything is fine. You can put a hand on your heart. You can say to yourself, everything is fine. All is well. All is well. All is well. I am fine. I am fine. With breathing, keep breathing and keep saying to yourself, everything is fine. Right? S is to soothe yourself. Then comes exhale, where with the final step, you exhale, take and say to you,
I am okay. Fine. I'm absolutely fine. Right? So this is a repeat again, where P is to pause. Like stop wherever you are. Stop doing whatever you are doing and sit down calmly. You know? A is activity. Focus on your breathing. You can shake your hands. U is to understand the situation, understand the environment, understand the perspective that everything is fine. S is to soothe yourself. You can put a hand on your heart. You can, soothe yourself by hugging yourself. And then E is to finally exhale and say one positive statement to yourself that everything is okay, I am safe, everything is fine. So jab we feel that I'm feeling anxious right now and I am not able to breathe, start with this pause. Not only when बहुत बार ऐसा सिनेरियो होता है कि जब मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक या तो फोबिया होता है या फिर एक हैड अ वेरी लॉन्ग डे, स्ट्रेस कैरी करते आ रहे हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है मेट्रो में, या फिर सिचुएशंस वेयर दे आर नॉट एबल टू बिकॉज ऑफ अ क्लोज एनवायरनमेंट दे फील सफोकेटेड. So in that case also we can help people around. In our family we can help people around. In colleges, when students feel very anxious exams के time पे या फिर बहुत ही major एक कुछ challenge आ गया life में and they are not able to manage it, teachers can also help students to apply this formula, pause wherever we are, or students can help their friends to apply this formula wherever they are. Pause, PAUSE. इस pause में से अगर हम 4 चीजें भी याद कर रख पाए ना उस moment के लिए, this will definitely help that person a lot. That is why we say that every day is a mental health day. जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ mental health day वाले दिन ही इसकी बात करेंगे ना. तो lot of times ऐसा होता है हमारे friends इस चीज के through गुजरे हैं and we don't even know about it. तो sometimes this एक scenario नहीं आ रही है and we don't really understand कि क्या करना है ना. तो जो ये मैंने एक एक्टिविटी शेयर की that you need to focus on breathing, exhale, inhale, अगर ऐसा करने से भी उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो then there are some ये पापा जो इसको बोलते हैं, ये पेपर्स होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं. कहीं भी इजीली मिल जाता है, दवाइयां भी हमें न्यूज़पेपर्स में मिलती हैं आजकल, तो कोई पैकेटिंग खाने की फूड पैकेटिंग है उसमें आ जाता है. तो वी कैन टेल एवरीवन जो कि ब्रेथलेसनेस जिसको बहुत इशू हो रहा है टू ब्लो इन दिस पेपर लाइक दिस एंड देन वी कैन डू अगेन, कैन ब्लो एंड do like this. So जब हम breathlessness होती है इसका मतलब हमें ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा है, ना हमारी ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है ना ऑक्सीजन हमारे माइंड में जा रहा है. ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर मोमेंट के लिए we need to find ways to help people around. So this is one of the ways to give them the paper bag. It is very very easy to carry. I will definitely suggest everyone to keep I would suggest really to please mute yourself. So thank you. मैं ये कह रही थी कि ये पेपर बैग बहुत इजीली मिल जाते हैं, पेपर बैग बहुत इजी टू कैरी है, तो हर कोई अपने बैग में एक ऐसा पेपर बैग रख सकता है. कभी ये हमारे भी यूज आ सकता है, नहीं तो कोई इन्वायरमेंट में किसी के लिए यूज आ सकता है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ब्लो, या तो हमारे लिए यूज करना है, अगर किसी और के लिए टेल देम टू ब्लो इट इन दिस which will definitely help in the breathlessness at that particular moment, right? And iske alawa we can start doing yoga at a regular, making it as a regular habit of ourselves.
मॉर्निंग योगा, ऑनलाइन योगाज भी चलती हैं आजकल तो बिकॉज व्हाई योगा, व्हाई फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज द मोर ऑक्सीजन गोइंग इन आवर माइंड, द लेस ऑफ thoughts will stay in our mind, the less of mental health activities will stay with us. And this is fact, and this is research which says the people who are indulging in physical activities will have less mental health illness as compared to those who do not indulge in physical activities, or who remain sedentary, who does not have any movement or physical activities involved in their life. So please, it's a humble request to try to incorporate physical activities in your life. Be it playing badminton. If you love to play cricket, play cricket. If you love to play football. Go for a walk, go for a jogging. Indulge yourself in yoga activities or cycling for that matter. Doesn't matter. Whatever it is. Any kind of physical activity is okay. Because all we want is to go oxygen to go in your mind and further in your lungs. The more it is going to your mind, the less of mental health illness will definitely be there in your life, right? And apart from this, you need to take good care of yourself. So self care, अपनी care करना बहुत जरूरी है, because जब हम अपनी केयर करेंगे, जब हमारे इमोशंस सेटल डाउन है, हैप्पी है, जॉयफुल है, then only people in our environment will definitely be happy. हम eventually उनकी help भी कर पाएंगे. So the more good emotions we will carry, that will not only help us, also it will help and it will have a good impact on our relationships, right? And apart from this, we can indulge in meditations. Meditation really calm your mind. It really reduces your stress. It definitely improves the efficiency and productivity at work. It gives a boost to your theta and delta waves, right? ये research particularly ऐसा बताती है कि हमारी ये थीटा एंड डेल्टा वेव्स को अफेक्ट करता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा माइंड काम होता है, हमारा एंगर कंट्रोल होता है, हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, right? So physical activity, self-care, meditation, and things like working for yourself and your hobbies is also important. And very important factor is to spend your time with your friends and family. Why? Because the more we spend our time with our friends and family, those who whom we love, there is a love hormone called oxytocin which is released, which will make us feel happy, which will make us feel better of our lives, right? And apart from this, we must help and give back to society, to NGOs, to people whom we can help. Why? Because इससे हमारा happiness question factor बढ़ता है. जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो ऑफ कोर्स उनको अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा हमें फील होगा when we will see someone happy, when we see someone feeling that I actually created value in that person's life. So it is very important that we give back to society in any form. So this will give you happiness, this will multiply your joy, right? So people who are living away from family, right? So how can they manage their feeling of that वो जो एक होता है ना distance हो जाता है. So for students and for people living away from family, is to first and foremost is to maintain a contact with your family, because आजकल it is very easy, the video calls. तो it is very important कि हम वीडियो कॉल्स करें, हम उनके टच में रहें, हम अपने इमोशंस उनके साथ शेयर करें, हम उनके इमोशंस के बारे में भी जानें. Because the more the distance, the less physical contact with them, less we can express our emotions to them, because they are busy in their life, you are busy in your life. तो हम ज्यादा interaction नहीं कर पाते.
What max we talk about is, okay, you had lunch, you had your dinner, okay, how was your day? That's it. But it is very important to express your emotions to your family. I know sometimes it feels कि मैं कुछ I cannot tell how my bad day was, because then they will feel bad and they will come here. तो sometimes we cannot be, हम एक बैरियर लगा देते हैं कि नहीं, अभी मैं अपने इमोशंस नहीं बता सकता, क्योंकि उनको बुरा लगेगा कि he is in pain and they will either call me or they will come out. So rather I will tell you to, instead of giving them in एकदम से बहुत सारा, एकदम से बॉम्ब फोड़ने की बजाय थोड़ा इमोशंस शेयर करते रहना चाहिए. And apart from that, if you cannot, just write a letter. This activity always helps. Write a big letter, whatever you want to share, and whatever good you want to share, whatever bad you want to share, just write a letter to them. Right? So this is how you can communicate with the people who are far away or living away from the families. So also one more thing I want to share here is emotion expression, बहुत important. And those people, those who do not share their emotions, those inside your body, अब हम अंदर ही डंप कर रहे हैं, वो अंदर डंप होने की वजह बॉडी अफेक्ट हो रही है, राइट? तो अपने इमोशंस को अंदर डंप करने की बजाय बाहर निकालना है. या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, या साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर. अगर आपको लगता है कि आप फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ नहीं कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के साथ, तो then you make a small diary and write all your emotions in that diary. Journaling करो, write it down. Why? Because the research says those who share their emotions are mentally fit as compared to those who do not share their emotions. So inside, those emotions are hurting you. Inside, they're creating their own space. And one day, either that ball of emotions inside will come out, will get displaced on someone else, या तो बाहर किसी पे निकलेगा, वो आपको परेशानी देगा. ठीक है? तो it is better to share your emotions. And please note, अगर कोई friend आपको अपने emotions share कर रहा है, तो you don't have to judge. You don't have to pass comment. You have to just carefully listen. ऐसा मत बोलो कि अरे हाँ मेरे साथ भी हुआ था, right? So be very sensitive and very kind and very compassionate. So be a very good listener during that time. Understand and do not judge. Also, अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत कुछ फेस कर रहे हैं लाइफ में, तो कंप्लीटली से नो, प्लीज आज मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता. एंड ऑल्सो इन कॉन्ट्ररी, जो कि अपने इमोशंस डंप कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो अपने इमोशंस शेयर करने से पहले पूछ ले, क्या आप मेरे इमोशंस या मेरी एक कहानी सुन सकते हो? आर यू ओके टू लिसन टू इट? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि एक पर्सन ऑलरेडी कुछ बहुत गो थ्रू कर रहा है और दूसरा पर्सन आके कुछ और बोल देता है कि मेरे साथ भी ये हुआ. सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन. वो ऑलरेडी कर रहा था, अब इसकी प्रॉब्लम और सुन के दैट पर्सन का मेल्टडाउन वहीं पर हो जाता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क, आर यू ओके टू लिसन टू माय प्रॉब्लम राइट नाउ? इफ अगर नहीं, तो देन टेल देम कि आज नहीं, कल आई कैन लिसन टू योर स्टोरी. So this is really important कि हम इमोशंस को समझे, इमोशंस को बाहर दूसरों को एक्सप्रेस करें, एंड इमोशंस को डंप ना करें एकदम से ना. slowly just tell them or ask them, take permission. Friends, sometimes it happens कि friend की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, तो always ask. And अगर कोई बता रहा है तो प्लीज जज मत करो, किसी के साथ कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है. So I am getting few questions here. One question is, what kind of lifestyle changes can help us get out of mental health issues? I have already shared meditation, breathing exercise. Breathing exercise is really important to get out of mental health issues. And mental health issues हैं तो उसको please show it to a counselor or psychologist.
It is okay to visit them. It is fine. Because identification के बिना हम कैसे बाहर आएंगे, I don't know. मतलब yes, meditation definitely help करेगा, breathing भी help करेगा, journaling भी help करेगा, but what kind of mental health issues there? करना important है. जैसे हम नॉर्मली एक ऑर्थोपेडिक्स के पास जाते हैं, नॉर्मली हम गैस्ट्रो के पास जाते हैं, हम नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं. गेट द प्रॉब्लम डायग्नोस्ड, मेडिसिन रिक्वायर्ड है तो ओके, नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से. बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वो 3-5 मेंटल हेल्थ सेशंस, मतलब काउंसलिंग सेशंस पे दे रिकवर. But there are cases जहाँ पे medicines की जरूरत होती है for sure, and that too moderate sessions are also fine. So yes, identification and diagnosis is important. If someone cannot identify that he is suffering from mental health, how can they identify? देखो, हमारी normal जैसे body normal हमारा mind है, इट इज लाइक कभी ओवरथिंकिंग एक पैटर्न तक होती है. अगर हम स्लीप अफेक्टेड है, अगर हम ज्यादा कम सो रहे हैं, नींद नहीं आती, हम बहुत लेथार्जिक फील करते हैं, एपेटाइट अफेक्टेड है, खाना की भूख नहीं लगती है, जब लगती है तो बहुत ही खाते हैं, ये मेजर आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स होते हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई करें. इसके है किसी से बात करने का मन नहीं करता, आइसोलेशन में रहते हैं. अगर हमें लगता है कि इन सब का आंसर यस है, तो we definitely need to go to a psychiatrist or a psychologist just to find out what is wrong with my body, what is wrong if I'm not getting. Also कभी-कभी बैठे-बैठे रोने का मन करने लग जाता है, जो कि कोई रीजन ही नहीं पता, कोई रीजन नहीं है, no reason at all. We just tried for no matter, for no reason at all. So that also comes under one of the signs and symptoms. कि हाँ हम ये चीजों के थ्रू go through कर रहे हैं, तो then we need to definitely come out and speak to our psychologist or a psychiatrist. Another question is, people nowadays are relating mental illness to mental health. Students need to know. Please explain. As far as I know, mental health is related to feelings, while mental illness is related to some problem in body part. See, yes, thank you sir for this. एक होता है mental well-being, है ना, mental health, mental well-being. एक होता है mental illness. तो जो मैंने आपको भी symptoms बताए, वो mental illness के अंदर आ जाता है. Mental illness में बहुत सारी illnesses आती हैं. Schizophrenia आता है, depression आता है, generalized anxiety, bipolar आता है, personality disorders आते हैं. ये सारे mental illness के अंदर आते हैं. एक होता है हमारी मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, जैसे मेंटल हाइजीन, राइट. ये मेंटल हाइजीन के अंदर आते हैं, जैसे कि मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए. लेट्स सी, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चीजें कर रहे हैं, जैसे कि जिम जा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, ग्लूटेन फ्री खा रहे हैं. दैट डजंट मीन आई हैव अ लाइफस्टाइल डिजीज. लाइफस्टाइल डिजीज में आता है हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज में आता है डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिजीज में आता है थायराइड, राइट. तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को पहले चेंज कर रही हूँ ताकि मुझे लाइफस्टाइल डिजीजेस ना हो. सिमिलरली मैं अपने मेंटल हेल्थ की वेलबींग का ध्यान रख रही हूँ ताकि मुझे मेंटल इलनेस ना हो. सो दैट इज व्हाट सर इज टेलिंग मी टू एक्सप्लेन. Another question is, how do we recognize symptoms and realize someone needs help? तो अपने symptoms तो हम easily पहचान लेंगे, पर environment में किसी को हमारी help चाहिए, ये हम कैसे identify करेंगे? So sometimes one of our friends or colleagues is not, मतलब पहले अच्छा था और एकदम से sudden shift आ गया है. Sudden shift ये आ गया है कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, वो हमसे कुछ share नहीं कर रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, वो फोन्स नहीं उठा रहा है, वो उसको अकेले रहना पसंद है, अगर आता चुप रहता है, नॉर्मल बिहेवियर से डेविएटेड बिहेवियर, ठीक है. समटाइम्स अगर बहुत सीवियर केस हो जाता है तो वो रोने भी लगते हैं, और सीवियर केस हो जाता है तो वो सबसे बदल के कपड़े पहनने लगते हैं, और सीवियर केस हो जाता है तो वो आपस में अपने आप से
तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हम नॉर्मल से डिफरेंट बिहेवियर कहेंगे, जो कि हम इफेक्ट कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते। देयर वाज दिस केस जहाँ पे स्टूडेंट स्टार्टेड क्राइंग इन क्लास for no reason. The student was sitting with the fan off, having lot of sweating and crying. तो वो केसेस में हमें, अगर हम डीप डाउन हमने उसको एनालिसिस किया या उससे बात करी, तो later on we realized yes, there was a trauma in past which is affecting him right now, and there is a starting of mental health disorder. So this is how we can identify. Another question is mania. ओके, मेनिया इज जहां पे हम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हमारा मेनियक फेज आता है ना। मेनियक फेज में बहुत सारी चीज होती हैं। एक चीज ऐसे होती है कि हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि मैं ताजमहल खरीद लूंगा, या फिर मैं I will do lot of shopping, and बहुत एक्साइटेड और हाइपर एक्टिव फेज होता है मेनिया। हाइपर मेनिया भी होता है, हाइपोमेनिया भी होता है। तो हाइपर में मैं बता रही हूँ ये सब चीजें होती है। ऑल्सो कि हम ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा एक्टिव इन एनर्जी है, एंड boisterous से थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड, दैट इज अ मेनिया फेज. One more question I have received, which is serious mental illness that may cause somebody to be very excited or violent. सीरियस एक्टिविटी जिसमें हम वायलेंस और खुद को भी हार्म करते हैं, दूसरों को भी हार्म देते हैं ऐसी एक्टिविटीज. illnesses like schizophrenia, illnesses like psychosis, जहाँ पे person is not having control over their own thoughts, person is not having control over, because they're active, the mind is the chemicals of the mind are not working properly. तो उस केस में person खुद को harm करने लगता है, also can harm the person environment में. But अगर ऐसा कोई केस होगा तो we definitely will be able to identify or analyze it easily. So that will be a very severe case. Sometimes, okay, how can we cure a patient of mania? All right, sir, I answer this. Sometimes we feel anxious or some stress, and we feel like spending a lot of money or shopping. Okay, so agar wo sometimes hai ki in like 2 months there is this one class where we spending a lot on shopping, that's fine. But if there is repeatedly it is happening where the moment I feel stress and I feel anxiety, I spend my energy in shopping, that is totally wrong. Because energy को channelize कर, हम अपनी एनर्जी को एंजाइटी को स्ट्रेस को चैनलाइज कर रहे हैं शॉपिंग, व्हिच इज टोटली रॉन्ग, राइट? सो उसके लिए जस्ट अ मिनट, उसके लिए प्लीज यूज दिस फॉर्मूला ऑफ PAUSE व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड. जब आपका एकदम से एक कंपल्शन आता है, एक आता है थॉट कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नाउ आई हैव टू डू शॉपिंग. जब आपको वो कंपल्शन आता है of buying and going on a website or on the stores, you need to command to yourself that I will not do it, and you will focus rather on that PAUSE. You will focus on breathing activity. You will speak to some of your friend whom you trust or a counselor, by having that compulsion of buying. So you need to identify your pattern, how frequent your compulsion of excess shopping is, or is it related to your anxiety or is it unrelated? So there are two different things. अगर ये related है तो anxiety का formula PAUSE आप apply करें. अगर unrelated है तो then you have to work on the compulsions of shopping. So सर have asked this question कि हम मेनिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं. सर मेनिया को पहले तो वही अगेन आइडेंटिफाई करना है कि मेनिया इन व्हाट फॉर्म इट इज. स्पीच है, एक्शन है, हाइपर एक्टिविटी में है, तो
how severe it is. If it is not that severe, तो then हम उसको अपने मेडिटेशन उस मेनिया को चैनलाइज करके इनटू उस हाइपर एक्टिविटी को हम डांसिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं. और अगर मेनिया बहुत हाई और सीवियर इंटेंसिटी का है तो देन डेफिनेटली we have to go to a psychiatrist. We have to start with the medicines and then we can start counseling parallelly with the maniac phases. Sir, actually mania का ना 2 phases होते हैं. Either it is few days very high and then settle it down. And it will go settle it down a little constant and then again mania and then it is going down. So there are different phases. तो ये बहुत important है इस चीज को analyze करना कि किस phase में और कब particularly that mania is happening. So yes, identification is very important, followed by the effects. Any more questions? Speak abruptly. Then Sir, can you please more on, can you elaborate little more on this specific colors, light and specific person? थोड़ा सा more elaborate कर सकते हैं क्या इस केस को? Dr. Anil Kumar Srivastava, elaborate a little on this case. Sir, जहां तक मुझे लग रहा है कि if person is speaking abruptly, then there is illusions or hallucinations of specific colors or specific persons. Elaborate कर सकते हैं तो I can understand little more. Because I had this one of the case, very excitingly, he also was abruptly speaking about persons does not exist, about a chip, radioactive chip. So those cases are very, very severe psychotic cases. So if you can identify, if you can give me more information, then I can tell you, of course. Any other questions? Oh, I'm open for questions. Any more doubts? Any other questions? I'm always available. You can take my contact from Dr. Anu. I definitely take session time. Is there any way? Okay, I think someone is. Okay, Vipin sir. Thank you so much. Thank you, Dr. Achal. जैसा समझ पाए, जिसमें कि क्लियर है कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. नो योरसेल्फ, और मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, अगर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ तो हमारी जर्नी आगे की बहुत इजी हो जाती है. और ऐसे ही अगर हम अपने आप को जानते हैं तो आवर सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वो कैसा है कैसे नहीं है, और उनकी फीलिंग्स आप कैसे लेते हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है. और तीसरा मैं इसमें अगर ऐड करूँ कि को भी जानना बहुत जरूरी है. जिस नेचर से हम सारी चीजें लेते हैं वो नेचर हमारा कैसा है, तो उसमें कैसे हम अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर वाटर हमारा पोल्यूटेड हो रहा है तो कैसे उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये सारी चीजें, और हमारा जो को एग्जिस्टेंस है जिससे मैं बना हूँ, वहां तक की अगर जर्नी में मैं अपने आप को ऐड कर पाऊँ, कहीं कोई कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ,
चार चीजें हम लोग अपने आप को जैसे कहते हैं कि नो योर सेल्फ, सोसाइटी, नेचर एंड को एग्जिस्टेंस। ये चारों चीजें अगर मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से एंजाइटी और डिप्रेशन की चीजें वो भी कम कर पाएंगे। और दूसरा जो मैम ने बताया मफीजा ने कि पॉज PAUSE, ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। इस फार्मूले के हम लोग फर्दर यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट मैथ के फार्मूला यूज करते हैं, वैसे हम पॉज का भी फार्मूला यूज करेंगे। And I gives me an immense pleasure to vote of thanks for the event. I would like to thank Dr. Anchal Mukiza who honored the session and give us valuable. I would like to thank our director sir, HOD sir, and all of the colleagues and students, participants, volunteers, and all. Last not least, our beloved audience for making this event a great success. Thank you so much, Dr. Anchal Mafiza. और ये सीरीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार होता है कि आपको मैं हम लोग यहाँ पर कॉलेज में भी एक सेशन रखेंगे जिसमें फेस टू फेस एक इंटरेक्शन हो सके। और बहुत सारी ये जो पार्ट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एंजाइटी फील करते हैं, उनकी जो फीलिंग है उसको हम रिमूव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सर। ये कार्तिकेय जी, कार्तिकेय our on behalf of Galgotia College, I send e-memento on behalf of Galgotia College. डॉक्टर ये डॉक्टर अनिल सर का एक हैंड राइज है, तो सर एक बात अपनी रखेंगे। थैंक यू सर, बोलिए। डॉक्टर अनिल। Yes, as you were talking about the colors, as some of the particular patient is talking about that I am getting energy from the orange or black sometimes repeatedly, and I am taking the energy and I am having I can do anything, I am powerful and something like that. So by how we can cure that particular patient? So we cannot cure them. We have to show them to a psychiatrist. Definitely, it is a psychosis case. So in that case, there will be a start of medicines. So medicine start होंगी. That is a severe case. तो वो थोड़ा सा sensitive case हो जाएगा. And being a psychologist, first psychiatrist medicine के बाद therapist after psychology के start. Okay. जी sir. Thank you. Because because someone is also talking about some specific persons abruptly, and of course we are that particular patient are not aware about these names, but she or he talking about that particular names, like something like repeatedly. That particular patient is having repeatedly some of the sentences repeatedly, and that type of So, probably we have to transfer to that particular psychiatric sir, definitely. जी. Okay. Thank you. Okay, now present e-memento. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Thanks to all for joining us, and thank you all audience. Thank you. Thank you so much. Now, Thank you, Dr. Now share feedback form. Kindly open your all participant your camera, and will one photograph is required on your camera. We are all open your camera for photograph.
and fill a feedback form for certificate. And thank you once again, Dr. Anchal. Thank you. शेयर करती है लिंक फीडबैक फॉर्म फिल कर नहीं अभी फिल कर रहे हैं ना फॉर्म फिल कुछ लोग